Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, overall the market was very sideways, but then at the end of the day, we saw a recovery in the market. So during the day, we saw that Nifty is almost traded close to 18,211, and then eventually we saw a bounce back. So the Nifty is now close at 18,300 level, which is again the levels where we are expecting there would be some amount of good buying will be seen. So overall, the bias is positive. Today is a weekly expiry. I believe this momentum should continue. We already have initiated a long position the Nifty at 18,300 level in the futures, and we were talking of 18,450. So my bias on the Nifty is positive, and gradually this now 18,200 will should act as a support is what I believe. On the higher side, 18,600 will be the immediate resistance. As and when that is taken out, I believe the all-time high level will also be taken out, which is at 18,887 levels. Coming to Bank Nifty is, as compared to Nifty, the Bank Nifty is slightly sideways. It is not yet clearly taken out the 43,500 level. But having said this, even holding above 43,000 is it's a sign of positive. We believe there are stocks like Axis Bank, IndusInd Bank, ICICI Bank. These are the counters which are very positive. Even yesterday's close, at the closing, we saw some amount of buying in HDFC Limited. So I think even the Bank Nifty should be rallying on the higher side. The momentum is very positive, strong from expiry point of view. It is very strong in the Nifty. So overall, the bias is positive. Bank Nifty immediate support is at 42,500, and even if 42,500 is broken, then again the next support is at 42,000. Eventually, this is the lower range where the Bank Nifty is finding support. Same with the Bank Nifty, 18,200 is the immediate support. Below that, 18,000 is the psychological support, and directionally, we would change the view only when 17,800 levels are broken down. So net, the bias is positive. And during the month of May, we are expecting some buying to be seen in the indices, and both the indices approaching the all-time high level. So this is the view for the market. Stock-specific action will be there. There are many mid-caps which we are liking. For example, we are already initiated a call on the green panel. We are like FSL is something which we are initiated a buy. So on the bias is positive. We should be heading towards the positive, and I won't be surprised if we see a Nifty closing somewhere close to 18,400 level. Futures, this is the futures level. Coming to derivatives data, so in Nifty futures, we have seen a long build up to the tune of 0.87%, which was an addition of 0.11 million share. The Nifty put call ratio has seen an uptick at 1.11 as compared to 1.0. So this is a sign of positive. The major additions were seen in the call option was seen at 18,400 and 18,500 option 500 strike price. So that may be a resistance. The support was seen as 18,300, 18,200 strike price. Coming to Bank Nifty has seen a short covering in yesterday's session to the tune of 1.76%. The put call ratio has improved from 0.74 to 0.91. So this is also a positive sign. And the major from the option data, the major put support from the put option do come at 43,100, 42,900, and the resistance is seen at 43,600 and 43,900. Overall, the net the bias is positive. I think we should be looking for the buy trade today. Lower level should be viewed as a buying opportunity. So that's the view from the technical point of view. I'll hand over to Archana Madam for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with L&T. So, the company reported the Q4 numbers yesterday. Net sales was up almost 10% at 58,330 crores, while EBITDA was up 5% at 6,800 crores. EBITDA margin has been flattish at 11.7%, while the net profit has gone up by 11% at 4,400 crores. The company has approved final dividend of ₹24 per share for this financial year. Good set of numbers, and stock may react positively on that.
On Dr. Reddy's, the net sales was up at 15%, 6,300 crores, while EBITDA was up by 33% at 1,490 crores. EBITDA margin has gone up by almost 300 bips to 25%, while the net profit was at 960 crores, which is nearly 10x growth over same quarter last year. The company has approved a final dividend of rupees 40 per share for this financial year. On Godrej Consumer, the company's net sales was up by 10% at 3,200 crores, while EBITDA has gone up by 32% by 665 crores. The EBITDA margin has also improved by 300 bips to 20.8%, while net profit has been up by almost 24% at 452 crores. Gujarat Gas also announced their Q4 numbers yesterday. The net sales was down by 16% at 3,900 crores, while EBITDA was down by 19.6% at 560 crore. Margin has been flattish at 14%, while the net profit was down by 16% at 370 crore. So kind of muted set of numbers by Gujarat Gas, and the stock may be in the negative territory on the weak set of numbers. On Rail Vikas Nigam and Siemens, the consortium of the two companies received an order worth rupees 300 crores from Mumbai Metropolitan Region Development Authority for design, manufacture, supply, installation, testing, and commissioning of 210 kV receiving substations for the main line. In this consortium, Siemens hold almost 60%, while RVNL holds 40% share. On Zydus Lifesciences, the company has received establishment inspection report from US FDA for the inspection conducted at facility in Moria, Ahmedabad, without any observation. The pre-approval inspection conducted from Jan 23 to 27 covered the trans milk patch products. So overall, it's positive news for Zydus Lifesciences. On Relaxo, the company reported their Q4 numbers yesterday. Good set of numbers. Net sales was up by almost 10 odd percent, and EBITDA was up by almost 6 odd percent to 118 crores, while EBITDA margin was flattish at 15%. The company has reported again flattish net profit growth at 63 crores. The call is scheduled on Friday, post which will come out with a detailed note on Relaxo. Currently, we have hold rating on the stock with a target price of 876. On Sera, the company reported good set of numbers. Net sales was up by almost 21% over same quarter last year at 532 crores. The company has focused on driving an improved product mix with the new products comprising products launched over the last 3 years, which represent 34% of the turnover in Q4 of this financial year. EBITDA was up by almost 3% YY, while EBITDA margin was flattish on Q4 FY22 at 16%. Higher other operating expenses has been weigh on the overall margin of the company. The net profit for the company was up 19% at 63 crores. We have hold rating on the stock with a target price of 5,990 rupees. The call is scheduled today, and post which will come out with a detailed note on Sera. But looking at numbers overall, and the last our interaction with the management, the overall things look pretty positive for Sera. The company has very strong cash balance of 700 odd crores. So if the long-term investors, keen to look into this segment, can have a look at it. And lastly, on HG Infra, the company's revenue came in at 1,470 crore, which is a strong growth of 43% on same quarter last year. While EBITDA was at 237 crore, again, very healthy growth of 52% YOY, while EBITDA margin has improved by 100 bips to 16.2%. The company has reported net profit of 148 crore, which is a robust growth of 62% over same quarter last year. We have buy rating on the stock with a target price of 1128. So that's it from my side. Now I request Shantanu to take it from here. Thank you, and over to you, Shantanu. Yeah, thank you, ma'am. So we'll start with the news for today. The first news is related to HDFC, where the company has received final approval for the securities from the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, for a change in control of HDFC Asset Management Company investment manager of HDFC AMC AIF to on account of the proposed composite scheme of amalgamation of HDFC Investments, HDFC Holdings with HDFC Bank.
The next news is related to CSB Bank, where the private sector lender has appointed Mr. Satish Gundewar as Chief Financial Officer with effect from June 5th, 2023. Mr. BK Divakar will step down as CFO on 4th of June. The next news is about Adani Enterprises, where a regulatory filing said on May 11 that the board of Adani Enterprises, the flagship entity of ports to power conglomerate Adani Group, will meet on May 13th to consider a proposal for raising funds. After the group's market value sunk by over $150 billion, the shares witnessed a recovery in the month of March when GQG Partners, a US based investment boutique firm, funneled $1.87 billion or a little over rupees 15,000 crores in the embattled group. The funding came in lieu of sale of shares in Adani Enterprises worth rupees 5,460 crores, Adani Ports and SEZ worth rupees 5,282 crores, Adani Green Energy worth rupees 2,806 crores, and electricity distributor Adani Transmission worth rupees 1,898 crores. The next news is about Muthoot Finance, where a clutch of retail investors have alleged that employees of Kerala-based Muthoot Group missold them non-convertible debentures of Sri Equipment Finance, passing them off as bonds from a sister company. About 49 people, several of them pensioners who have transacted with Muthoot for a decade, have come forward so far, some of them approaching the local police as well. Coming to the next news related to Hero Motocorp, where government sources said that Hero Electric and Okinawa Scooters, the two firms that allegedly didn't comply with localization norms to claim subsidy under FAME 2 scheme, have told the center that they have not breached any guidelines. The electric vehicle manufacturers submitted their representations after the Ministry of Heavy Industries sent subsidy recovery notices to alleged defaulters of the FAME scheme. Coming to the next news about Bajaj Electricals, a meeting of Board of Directors is scheduled on May 23rd to consider and approve a proposal for raising funds by way of issuance of securities on private placement basis. The board will also approve financial results for the March quarter financial year 2023 and dividend if any. Next news is about Jindal Stainless, where the Board of Directors of Jindal Stainless will be the meeting will be held on Wednesday, 17th of May to consider and approve financial results for quarter 4 of FY23 and give in principal approval to raise funds by way of issue of debt securities through private placement or any other method. Coming to the result of Escorts Kubota. Escorts Kubota on Wednesday reported a 13.9% increase in consolidated net profit at rupees 216.5 crores for quarter 4 of financial year 2023. Consolidated revenues from operations rose by 17.4% to rupees 2,214.5 crores, but EBITDA fell to rupees 233.2 crores. The final news is related to Hindalco Industries, whose subsidiary Novelis said that its net income attributable to the common shareholder in quarter 4 of FY23 was $156 million, which is down by 27% compared to the year ago period. Net income from the continuing operations excluding special items was $175 million, which is down by 7% year on year, while adjusted EBITDA of $403 million fell by 6% year on year. So this was all from my side. Now handing it over to Hitendra. Thank you. Yeah, thank you and good morning everyone. हम स्कॉल पे हिंदी में पहले स्टार्ट करते हैं एनएनपी के नतीजे में। अगर नतीजे देखे तो Q4 के रेवेन्यू 10% ऊपर था जो कि 58,335 करोड़ का है। एबिटा में देखा जाए तो 5% हायर था जो कि 6,800 करोड़ का। मार्जिन देखा जाए तो 12% के आसपास 11.7% का था जो कि पहले 12 है। 0.3 का थोड़ा सा मार्जिन में एक्स्ट्रा आता है, बट नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 11% हायर था जो कि 4,440 करोड़। बोर्ड ने 24 रुपए का डिविडेंड भी अप्रूव किया है। डॉक्टर रेड्डीज के भी नतीजे देखेगा, रेवेन्यू देखा जाए 15% हायर है जो कि 6,315 करोड़ का। एबिटा देखा जाए 33% हायर है जो कि 1,588 करोड़ का। एबिटा मार्जिन में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखिए 400 बिप्स का जो कि 4% का क्रॉस था। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 960 करोड़, नियरली 10x है दिखा जा रहा है जो कि सेम क्वार्टर लास्ट है। 96 करोड़ को हमने क्लोज किया तो 960 करोड़ से। तो कंपनी ने अप्रूव किया है फाइनल डिविडेंड 40 का क्लोज किया।
जीसीसीबीएल के नतीजे अगर रेवेन्यू देख रहे 10% हाई था 3200 करोड़ के आसपास का, अगर एबिटा देखा वो भी 32% हाई था 665 करोड़ का। मार्जिन देखा जाए तो 300 बिप्स हायर थे जो कि 21% के आसपास थे, और नेट प्रॉफिट देखा जाए 24% हायर था 452 करोड़ का। गुजरात गैस के भी नतीजे देखे गए, रेवेन्यू डाउन थे 16% जो कि 3928 करोड़ के। एबिटा भी हमें एबिटा में भी गिरावट थी 20% के आसपास जो कि 560 करोड़ का। मार्जिन देखा जाए फ्लैटिश थे 14.2% के आसपास का 15% से। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 16% डाउन था, 17% डाउन था जो कि 370 करोड़ का। बोर्ड ने 6.5 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आरबीएनएल और सीमेंस को एक दोनों कंस्ट्रक्शन को मिला कि ऑर्डर मिला है 300 करोड़ का, जो कि एमएमआरडीए से मिला है, मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजनल डेवलपमेंट से। और मैन्युफैक्चर करेंगे, सप्लाई और इंस्टॉल करेंगे, टेस्टिंग, जो कि कमीशन में 110 केवीए रिसेल सबस्टेशन जो कि मेन लाइन मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए रहेगा। इस पे सीमेंस का लीड करेगी जो कि 60% शेयर होल्ड करेगी, और आरबीएनएल का 40%। ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा दोनों स्टॉक्स के लिए। राजस लाइफ साइंस को भी ईएसआई रिपोर्ट मिला है यूएस से। उनके यहाँ पे इसका इंस्पेक्शन हुआ था मोदी आने पर, उन्हें 3 इंस्पेक्शन मिला गया है जो कि 23 से 27 का था, और उन्हें एक भी ऑब्जर्वेशन के साथ क्लियर किया गया है। यहाँ से इनकी बेसिकली ट्रांसफर्म और पास प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। तो लैक्सो के भी नतीजे ओवरऑल अच्छे थे, और उसमें सेल्स देखा जाए तो 10% है जो कि 74 करोड़ के आसपास का। एबिटा देखा जाए तो 6% ऊपर था 118 करोड़ का। मार्जिन हार्ड थोड़ा सा नीचे था जो कि 15.4% का था, क्योंकि 39 के आसपास का था। कंपनी ने जो रिपोर्ट किया फ्लैटिश नेट प्रॉफिट क्योंकि 61 करोड़ का, और डिविडेंड दिया 2.5 रुपये पर शेयर का। सेरा के भी नतीजे देखे, नतीजे अच्छे थे। अगर हम सेल से करें तो 21% हायर थे, और सेरा ने फोकस किया अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और जो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया अगले लास्ट 3 साल में, उसमें रिप्रेजेंट देखे 34% की ग्रोथ देखी गई। एबिटा भी देखा जाए तो 3% हायर था। मार्जिन थोड़ा सा डाउन था 310 के आसपास का, ये 16.5% है, और हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के चलते मार्जिन में प्रेशर आते हुए दिख रहा था। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 20% हायर था जो कि 650 करोड़ के आसपास था। जी इंफ्रा के भी नतीजे के रेवेन्यू देखा जाए तो 1459 करोड़ का है जो कि 43% आया था वाई वाई बेसिस पे। एबिटा देखा जाए 237 करोड़ का जो कि 52% आया था। मार्जिन देखा जाए तो 16% के आसपास के था। प्रॉफिट देखा जाए तो 148 करोड़ का जो कि 62% आया था। नेक्स्ट है एचडीएफसी को एक अप्रूवल मिल चुका है सेबी से कि जो कि एचडीएफसी एमजी में इनका जो मैनेजमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट है, और उसको स्कीम ऑफ अमलगेशन के चलते एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी होल्डिंग, एचडीएफसी के साथ वो सब बैंक्स के साथ वो अमेंडमेंट कर देंगे। सीएसबी बैंक ने वो भी अपॉइंट किया है सतीश गुंडेवर को एज सीएफओ, वे तब से करेगा जून 5 से, और बीके दिवाकर की ने स्टेप डाउन कर दिया है। अडानी एंटरप्राइज ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि जो अडानी जो एक मीटिंग करेगी 30 मई को, और एक प्रपोजल करेगी फंड रेज करने के लिए, ये कि इनकी जो मार्केट की संख्या वाली जो कि 150 बिलियन में जो रेज करे जीकेजी पार्टनर्स से, और उस फाइनल में देखा जाए तो 1.87 बिलियन का और 15,000 करोड़ के आसपास का जो इनका जो फंडिंग है उसके चलते ये कर रहे हैं। और फंडिंग ये कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो शेयर्स है 5460 अडानी पोर्ट्स के और 5282 अडानी ग्रीन एनर्जी के 2806 करोड़ के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अडानी नेटवर्क्स के आसपास के लोग। मुथूट फाइनेंस के भी कहा कई फ्लैश ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं कि जो मुथूट के एम्प्लॉयज है केरला बेस्ड के, जो उन्होंने एनसीडी जो कि एसआईआई इक्विपमेंट फाइनेंस जो कि डिफॉल्ट कर चुके हैं, और उनकी सिस्टर कंपनी के ऐसे 49 लोगों ने ऐसा पिटिशन फाइल किया है पेंशनर्स के, और पुलिस स्टेशन में उन्होंने अप्रूव किया है लोकल पुलिस के पास। हीरो मोटो को अपने कहा कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा स्कूटर जो कि 2 फॉर्म से एनालाइज किया कि कंप्लाई नहीं कर रहे फेम के सब्सिडी के साथ, और उन्होंने सेंटर के साथ उसे चेक करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट किया गया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के डायरेक्टर्स ने कहा कि वो मई 23 को कंसिडर करेंगे और अप्रूव करेंगे फंड रेज करने के लिए इशूएंस ऑफ सिक्योरिटीज के वाया प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के लिए। जिंदाल स्टेनलेस स्टील के भी हाँ, उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग रखी है मई 17 को, जो कि अप्रूव करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे रेज फंड्स के लिए, जो कि के थ्रू हो सकता है। नतीजे देखेंगे इसका भी नतीजे देखेंगे, अगर उन्होंने 14% हायर रेज किया, नेट प्रॉफिट जो कि 216 करोड़ का, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखा जाए तो ऑपरेशन से 17% आया था जो कि 2214 करोड़ का। एबिटा में थोड़ी सी गिरावट है 233 करोड़ की। हिंडाल्को की सब्सिडी नोवेलिस के भी जो नतीजे आ रहे हैं, उसका नेट इनकम देखा जाए तो कॉमन शेयर इंटरेस्ट 156 मिलियन के आसपास का है, डॉलर टर्म्स में है, और जो कि डाउन है 27% लास्ट ईयर के। और नेट इनकम भी देखा जाए तो भी वो भी देखा जाए तो 7% लोअर है, जो कि 175 मिलियन के, जबकि एडजस्टेड एबिटा देखा जाए तो 6% के 403 मिलियन के आसपास।
मार्केट्स के ऊपर देख लेते हैं, तो अगर मार्केट्स हमें लग रहा है यहाँ से अगर 18,200 का एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू बनता हुआ दिख रहा है, 17,800 18,000 के आसपास का ये थोड़ा सा लंबा अगर जिसको व्यू चेन के लिए ये बेस रहेगा। 18,200 अगर इमीडिएटली यही तोड़ता है तो मार्केट मुझे लगता है यहाँ से 18,500 18,600 के आसपास तक जाने की तैयारी कर सकता है। अगर आज की एक्सपायरी अगर व्यू से देखा जाए तो अगर देर से कल देखा जाए तो कॉल राइटिंग बहुत हैवी थी 18,200 18,300 पे, तो वो सब उन्होंने लास्ट आवर में शॉर्ट कवर किया और वहाँ पे वो एज अ पुट राइटर्स अगर वहाँ आ गए हैं तो एक बेस आते हुए दिख रहा है 18,200 18,300 में, और एग्जिट्स को डिफाइन कर रहे हैं कि 60 पॉइंट ऊपर है। तो हमें लगता है कि 18,450 से 18,300 के बीच में एक्सपायरी की सेटलमेंट होनी चाहिए। और हमने एक संदर्भ फाइनेंस के ऊपर कॉल इनिशिएट किया गया है जिसे हम आप बाय कर सकते हैं 2405 से लेके 2415 के बीच में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2300 का और टारगेट रहेगा 2680 के लिए। तो उसके 4 वीक के लिए जिसका पोजिशन ट्रेड करना है वो ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू फॉर द मॉर्निंग कॉल कॉल।